अब जो है हमने अभी रिसेंटली एक वुमेन वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया है और जिसके लिए अभी हम लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज रखी है जिसमें ये सीरीज ऑफ वेबिनार्स हुए थे जिसका सॉरी तो सॉरी तो उस सीरीज ऑफ वेबिनार का एक पहला वेबिनार है जो कि हमने टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के साथ हमने इनिशिएट किया एंड देन देयर विल बी अ कपल ऑफ अदर वेबिनार्स जो कि एक हमारे बताते चलूं कि ये हमारे सिर्फ साउथ रीजन से नहीं है बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान से है, हमारे पंजाब रीजन से, हमारे इस्लामाबाद साइड से। सो वी हैव सो यहाँ से अगेन आप सबको भी इस चीज से आगाह कर दूं कि साउथ से जिस तरीके से कराची एंड बलूचिस्तान सिंध के लिए मैं इसको लीड कर रही हूँ, तो पंजाब साइड से, लाहौर साइड से मधिया है हमारी डिप्टी डायरेक्टर और इस्लामाबाद से हमारे एहसान साहब है। तो इसलिए ऑल ओवर पाकिस्तान हमने इस इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया ताकि एक दफा सब मिलकर दोबारा से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और इस सिलसिले में हमने अपना स्पेसिफिक आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे बल्कि आप जरूर देखिएगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक स्पेसिफिक हमने वेब पेज बनाया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे उसका लिंक है, उस पर हमारा एक तमाम पर एक्टिविटीज हम उसे अपडेट करते हैं। इसके अलावा टीडा के मेन पेज पे हमारा एनुअल बिजनेस प्लान है जिसमें वुमेन विंग का भी अपनी जो एक्टिविटीज है वो हमारी अभी जो गुजर रहे हैं वेबिनार, जो चीज हो रही है, जो होती जाएगी, वो सब कुछ अपडेटेड रहेगा। तो इसलिए प्लीज उसको जरूर देखते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो हम लोगों ने वहाँ पे स्पेशल आप लोगों के लिए क्वेश्चन बॉक्स रखना है जहाँ पे आप आराम से अपने क्वेरीज वहाँ पे भी रख सकते हैं, लाइव चैट बॉक्स है वहाँ पे भी आप अपनी सबमिट कर सकते हैं क्वेरीज और अपने अपने जो रीजन है वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स एंड जैसे मेरे साथ जो है यहाँ पे ऑफ कोर्स मुझे बताने की जरूरत है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि तन्वी जो है वो आपको पता है कि वो लीड रोल हमारे, मैं तो उनको कहती हूँ कि ये हमारे फैशन आइकॉन तो वर्कशॉप और ट्रेनिंग की बात होती है जो मिस करेंगे वो वहां से जाके तो कोई भी चीज हमारी मिस होती है तो हमारे वेबिनार्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गई, वर्कशॉप्स हो गई, कोई भी एक्टिविटी तो हमारी हर रीजन की अपलोड होगी उस वेबसाइट पे, तो आप लोग सब वहां से इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक बहुत हमारा हैपनिंग इवेंट हमारा स्टार्ट लॉन्च होने वाला है जो कि काफी रेजर है डेवलपमेंट का और जो कि इस्लामाबाद से ये लॉन्च किया जाएगा और ये आप लोगों की डिटेल्स जैसे ही हम लोग फाइनलाइज करते हैं तो आपसे शेयर हो जाएंगी और प्लीज उसमें एक्टिवली आप देखिएगा तो उसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत आपको एक्टिव उसमें कनेक्शन मिलेगा। और इसके अलावा हमारा प्लान में चल रहे हैं चीजों में हमारा जो स्पेसिफिक एग्जीबिशन होता है नेक्स्ट डे वो हमारा प्लान है और वो आपको लाहौर में बेस्ड होगा और इंशाल्लाह उसकी भी जैसे डेट्स और तफसीलात होती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे आपको। तो आप सबसे जो है वो बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज इस चीज को अब आपने जितना भी इंफॉर्मेशन है उसमें हर फोकल पर्सन है यहाँ पे जैसे मैंने बताया मेरा तमीमी है, वहाँ पे बदिया है, उमर एहसान है, तो आप हर टाइम किसी भी टाइम आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। So thank you for coming. हम सब ये चाह रहे थे कि everybody सती साहब खुद इसीलिए आए क्योंकि ये इनिशिएटिव जो था जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अभी रिसेंट हमारा इनिशिएटिव है और आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोस टू यू सर क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग ये पूरा डेवलपमेंट का जो आइडिया था वो सर की तरफ से आया और उसके बाद फिर सर ने सबको अपनी अपनी जगहों पे दोबारा से ड्यूटीज असाइन की और वही चीज सर का विजन था कि शुड बी मोर फोकस्ड वही एक्टिविटीज जो हम पहले कर रहे थे बहुत गवर्नमेंट की हताशत थी तो सरकार ने कहा था कि आप एक नए तरीके से इस इनिशिएटिव को लेकर बिल्कुल फोकस होकर वुमेन स्पेसिफिक अपने इनिशिएटिव्स करें। तो इसलिए बस अभी मैंने सर से ये रिक्वेस्ट की है कि सर आप प्लीज थोड़ा सा इसको ओपन कर दें और ऑलरेडी एक सेशन स्टार्ट हुआ है आप उससे मतलब काफी दिनों से जो है ये एक शिकायत थी कि टीडर में कोई फोकल पॉइंट नहीं है और क्योंकि टीडर में उसके तकरीबन 15 ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में एंड criminal office very well. So we would get to meet women at different offices. तो इसको सेंट्रलाइज करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था। फिर हमने ऐसा किया कि पेपरलेस एनवायरनमेंट, तो सारे ऑफिस हमारे कनेक्टेड हैं ई फाइलिंग सिस्टम
So now officers sitting and giving also reports to the boss in Karachi and by इसको देखते हुए फिर हमने decided to develop a team which sits in 3 different places, Lahore, Islamabad, and Karachi. The idea was to try to deal with the women entrepreneurs at 3 different locations. And then we developed a space in our website. आपने हमारी website देखी होगी, उसमें हमने एक special वो बनाया और फिर हमने इस साल एनुअल वर्क प्लान जो है किया जाता है उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से एक स्पेसिफिक बजट भी रखा है और एक्टिविटी भी रखी है। यू नीड टू शेयर सर ये सारी चीजें थोड़ी-थोड़ी मैंने इनपुट इनके साथ इनको बताया है और लेकिन मजीद हम मुझे ये बताया कि मुझसे जो चीजें काफी वो शेयर और आपको एनुअल बिजनेस प्लान हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन से एंड देन यू कैन पुश अस के यार आपने ये रखा था तो ये कब इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा इवेंट जो है वो वैक्स नेट के नाम से जो होता था हाँ वो लाहौर में हमने करना है। आई होप कोविड गेट्स कंट्रोल्ड एंड वी आर एबल वी आर प्लानिंग इट इन नवंबर। So I hope that we do it. यहाँ पे शायद इसको देखती हैं। सर इनको सोचिए आपके आवाज करके नहीं आ रही आवाज। अभी तो आ रही है फुट नोट पास Samimi and Shumaila they are the representatives in Karachi. Then we have Umar in Islamabad and Nadia in Lahore. So the idea is to somehow be able to organize women. There are 20 chamber of commerce, I guess, and many of them are not really very effective or functional. I am sure you are representing different chambers and और ऑनलाइन के हम रजिस्टर कर रहे हैं members को and I wish that we update those membership so that everybody can see who are the members of the chambers. ठीक है हमने कहा लाहौर का किया जी सर बहुत सारे डेटा अभी हमारा ये इनिशियल और बहुत सारा काम मैं ये चाह रहा था कि आप इनके साथ डिटेल में अपना एनुअल वर्क प्लान शेयर करें उसमें कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग भी है कुछ और भी हम चाहते हैं कि जो डेलीगेशन हैं उसमें आप रिप्रेजेंट हो या जो एग्जीबिशन होते हैं उसमें देयर इज अ स्पेशल कोटा फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तो वो मैंने देखा है कि कवर नहीं हो पाता क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादातर खवातीन जो काम कर रही है दे आर डूइंग इट ऑनलाइन and on the basis of DHL और इस तरह से मतलब full commercial इस तरह नहीं I can understand कि उसके अपने obvious issues नहीं हैं it is a start the idea is to meet you for the first time coordinate और एक आपके पास मतलब तो point single point मिल जाए जिससे हम चीजों को आगे बढ़ाएं तो ये निश्चित पहले भी था हमने शायद इसको दोबारा फ्रेशन किया है we have put up this new floor also we have developed research wing as well within the I hope that you will find Shamini and Shumaila as the cooperate करो सर ये बता सकते So we can always meet. You can meet them if you feel like. You can inform me. I'll obviously be there to meet you. Asad is my staff officer. You can contact him. Definitely. So I hope that you do also, assemble yourself and do something more meaningful. Come up with your ideas. Let us, work with you and try to, fulfill the objectives that we have. Women have become very active over time, though they are not very big business women, but because of Facebook and online e-commerce thing, I think there has been a change that is coming up. जो अभी तक कैप्चर नहीं हो रहा मीडिया में लेकिन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा खवातीन घर से बैठ के बहुत सारा काम अब खुद कर रही है little e-commerce information और फिर ये जो payment platform वगैरह बना है I see brighter prospects for new entrepreneurs coming up women included इसमें ये है कि sunk cost कम है दुकान बनाने की और वो करने की अब ये है कि low cost startups possible हो गए because of e-commerce I think this is the time to capture it हम जो है e-commerce के ऊपर भी Amazon के ऊपर भी कर रहे हैं उसको क्या जमीन हो रहा है क्योंकि वुमेन स्पेसिफिक Amazon की पेनिंग्स है वो भी करें Amazon पे यू कैन सेल सेलिंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आ गया हम एक सीरीज कर रहे हैं डिफरेंट चेंबर्स के साथ आप वुमेन चेंबर्स को भी इसमें डालें जी ठीक है जमीन से क्या उनकी एक टीम है हमारी जो इसको वो करती है कि Amazon पे किस तरह खवातीन जो है अपनी चीजों की लिस्टिंग करते हैं एट दैट ठीक है ना they can go to or also physically भी also कराची में भी करें ठीक है तो
I want to see something happen, and you come back to me and tell me कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ, ये करना चाहिए. I'll be very happy if you come up with new ideas. और आप चाहें कुछ करना, ठीक है? So I'll leave it here. You take it up from there, ठीक है ना? और thank you for coming. तो अब मैं चाहूंगी कि without further ado, I request Mr. Gauhar Ajmal साहब के जो अपना वर्कशॉप या हमारा जो वेबिनार है उसको formally please अपना start करेंगे. Over to you, Mr. Gauhar साहब. Thank you everyone. Okay, Bismillah Rahman Rahim, and thank you very much. Hello and welcome everyone. My name is Gauhar Ajmal and I will talk about garment construction today. I am a graduate from Pakistan School of Fashion Design, now known as Pakistan Institute of Fashion Design, in collaboration with the French High School École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Now it's known as Institut de la Mode. It was a joint project of Trade Development Authority and French La Chambre Syndicale, formerly known as Export Promotion Bureau. I have a long-term association with the TDAP, starting from my life as a fashion student. Here I am a product of visionary people from TDAP. Later I did a lot of projects for TDAP, to name a few. In 2010, I was the first one who initiated the idea of a fashion show in Expo Pakistan, which later developed into a fashion week. I directed the Handicraft Show 2010 for TDAP. I also directed the TDAP Cultural Connection Fashion Show in 5th Kunming China Fair 2010. Currently, I am working as the head of Department for Fashion and Apparel at Textile Institute of Pakistan, under the visionary leadership of Chancellor Mr. Abdul Majid and Honorable President Mr. Humayun Zafar. TIP has been a value addition project initiated by Actima for the export industry, also funded by TDAP. Before I start, I request not to be interrupted during the presentation. Please mute your microphones. And should you need to ask anything, we have question and answer session after the presentation has completed. Do dap, do dap, do dap, do da da da. Do dap, do dap, do dap, do da da da. Do dap, do dap, do dap, do da da da. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing, but all I hear is the sound of rain falling on the ground.
I sit and watch as tears go by. Do-dap, 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 do-da-da-da. Do-da-da-da. Quei due continuavano. Da lei saliva a fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta. Do-dap-do-dap-do-dap-do-da-da-da. Quei due continuavano. Da lei saliva a fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da, do-da-do-do-do. Do-dap, 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 do-da-da-da. Assalamu alaikum everyone. I hope it gave you a little bit of an introduction on what we do at TIP and the kind of training behind the scenes that we go through to prepare these garments. When I was assigned this task of the webinar where I had to talk about pattern making and assembling a garment, I thought about it, and I realized that I need to make things simple, and I need to break it down for people to understand what exactly we do in the construction of a garment. Second presentation. So I'll walk you through the process stepwise, and I hope that enlightens the entire process. Okay, what exactly does pattern making mean? Basically, it's a template. It's the mold that we create of a body so that we can cover it. So when, like Michelangelo said that the sculpture was always there, I just free it from this piece of stone. That's pretty much the job we do, as pattern makers, that we find the right size and we cover it in a way where we get the exact mold of the body, and it's all about manipulating and shaping a flat piece of fabric to conform to one garment. So basically what pattern making does is it's a bridge function between the design and the production. Now there are two types of pattern making. One is flat pattern making and the other one is draping, which is three-dimensional. What flat pattern making means is that we put a sheet of paper on a table and then we work it through that pattern, and over years of experience you kind of get to understand how it will fall on the body. But with draping we have an added advantage that we actually use these mannequins where we can actually see the real-time shape of a collar or how the armhole is going to sit on the body. We cannot have it too close to the neck, we cannot have it too far out. So we need to know the right placement and how to actually approach the measurement process. So I have put it down into 5 simple steps. The first thing we need to do is you collect all the relevant materials, because when you have the medium that you will be working in, it's easier to add and subtract. Then the most important part is how to take the proper measurement.
Now, really changes the way we look at the pattern, and then using the correct sizing. The emphasis is on the correct sizing method. Once you have got the right sizing, because unfortunately in Pakistan we do not have a standard sizing system, so all brands will have a different size chart. Whereas in Europe and America we have a standard sizing system. You can just pick it off the rack and it will fit well. So that's one area that TIP is working on, so that we can help the industry in this standardizing the sizing system. And then the third part is that you add style to your design. Grading that design is the fourth process, and we shape it into a garment. That's a very simple 5-step process we need to know before we actually understand what pattern construction is. What the first thing we need to do is we need to create the template, the mold of the body, which is a basic block. So if you can see on your screen, we have a basic block pattern where we have the front and back, and we have go back to the slide. We have front and back, and we have a sleeve. So if we attach the entire garment together, it becomes a shirt. So underneath every garment, there is this basic block that is functional. That's practically the engine of the car. So once the block is right, you can alter the sleeve lengths, you can change the collar sizes, you can change the lengths of the garment. You can bring it out into any shape that you need. But the most important thing is you need to have a basic block, and these blocks actually help you create any possible design you can think of. After you have got the basic bodice block ready for you, all you need to do is you need to add ease to it. Ease is basically the extra fabric we add for the movement and for the comfort and wearability. Very two important things, because when you will have a garment, you will get up, you will sit down, you will eat, you will have movement. So the garment needs to be comfortable throughout that entire process. Not only, because when we put it on a mannequin, the mannequin doesn't move. But for human forms, we need to have it comfortable. So the next part is that we create designs. So now we will use our basic blocks. We can alter the design lines, we can alter the darts, we can alter the necklines, we can add ease, we can add pleats. You can be as creative as you want to be, but the base of the line is that underneath each design you have that basic block of that body, which is constantly functional, which is what we use to create any design. That's basically the foundation, the building block of it. And the most important part is connecting the dots. So the process is we take measurements. You can take as many measurements as, apart from the basic one, you can add as many you want to. Now we have 3D body scanners. We have this process of anthropometry, which helps us create more data points, and we are able to kind of connect the dots in a way to make a pattern. And the beauty of it is that you can only connect the dot backwards. So once you have all the information, that is where you will proceed further. Okay, now I'm going to walk you through another process, how computer has made our life easy. So now you have got this screen in front of you where you see the computer. We are feeding in all the data points, and you can actually create an avatar of a body, any body you want to, and you can see it in real time how it looks. So once you create the avatar, then you can actually design on that block, and the pattern will be created alongside. And you see now we're using the basic block
we are connecting all the data points, and then we will virtually stitch the darts, stitch the front, stitch the side of the garment, and we can actually look at the garment, how it falls on the body. So we create the basic block, we ensure how it's going to fit on the body, and these new softwares have really helped us because we can actually look at the garment in real time. Now we are adding straps to it. One of the most important part in pattern making is that your pattern needs to be straight, aligned to the selvage in a straight grain. Now this is very important because that is the most stable part of the fabric. So once we have a computer, we can use, instead of creating constantly the same block again and again, we can use the template provided in the computer. So you make your basic block, you save it, and every time you need to start a new garment, like we use a Word document, you start up with a fresh template every time you need to write a letter or a book or something like that. So you see, now what we are doing is we are connecting all the pieces, and that straight line in the middle is our grain line, which is showing how our pattern is going to fall straight on the body. So if you do not keep it in the straight grain line, the problem is that your fabric will start to behave differently. Like in bias, it stretches way too much, and then it's not a garment that will fall properly. So if you see now, first the thing is that we create the basic skirt, we make sure that it fits properly on the body. Now you can add a panel to it, you can add 2 panels to it, you can add flare to it, you can remove these panels. You can remove these panels, and while you're actually making the pattern, you can add a design line to it. You can make it asymmetrical. You can further make changes, like I can add a slit in the front of the skirt, so that and you can actually look at it in real time, so you understand how the pattern is behaving on the body. So if you look at it, we have used the same basic block, and we are just converting into a different design with a separate neckline, how it has to fall at the back, how the shoulder blade will be covered. And then we can virtually stitch the entire garment together to give it that 3-dimensional variability look without actually going through the process. Like back in the days, we used to make a sample, get somebody to try it on, see if it is working or not. So that whole process have been fast-tracked by the use of the latest technology, and we can bring the whole thing back to the basic skirt and the basic top, just by manipulating the entire panels of the pattern. So you see how we can magically convert into different designs, and each design will be unique in itself, but at the base of every design we have that basic functional block. Now you can add prints to it, you can add shades to it, you can add different looks to it, and you can actually choose, rather than going through the whole resource of actually buying it, getting the trims and swatches and going through the whole process. You can just scan everything, put it in the computer, have a look at it. Once it's visible and it's clear, you see your final garment is ready in front of you in the exact look you are wanting to have. How deep the armhole has to be, how the neckline is going to fall, and it's just fantastic with this new technology that we can fast track the whole pattern making process. Welcome back, everyone. I'm free to take any questions that you may have for garment construction and pattern making. Can everyone hear me? जी जी बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, अब आवाज आ रही है. अच्छा, good. So if you have any questions regarding pattern making, I'm happy to answer. जी बिल्कुल. समीना फाजिल, I am a founder president of Islamabad Women Chamber of Commerce and Industry.
और तमीमी के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ही इज डूइंग वेल। और जब ये उन्होंने मुझसे शेयर किया कि वो ये पैटर्न मेकिंग के ऊपर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अपना बिजनेस नहीं, आई एम डूइंग माय बिजनेस फ्रॉम लास्ट 31 इयर्स एंड आई स्टार्टेड विद द गारमेंट फैक्ट्री। एंड मैंने भी क्योंकि इसमें लाहौर से एजुकेशन ली थी अपने डिजाइनिंग की, ठीक है। तो अब यही जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ खवातीन फेस कर रही हैं कि वो बना तो बहुत कुछ रही हैं, बहुत पाकिस्तान में स्किल हैंड भी हैं, लेकिन अगर हम उनको एक प्रॉपर उसमें देखें तो उनकी उस तरीके से उनकी डिजाइनिंग नहीं होती। बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की कि अगर चलें, जब भी देर आए दुरुस्त आए, हम कहीं से स्टार्ट कर लें इसको। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और अगर इस तरफ ये खवातीन आ जाएं और पैटर्न मेकिंग सीख लें, तो मैं समझती हूँ कि जो इतनी अच्छी हैंड एम्ब्रॉयडरीज पाकिस्तान में हो रही हैं और पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम उनको अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। आज से कोई 8-10 साल पहले हमें यूएसएड ने हैंडमेड पाकिस्तान के नाम से 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया था। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से था कि उन्होंने हमें स्टेप टू स्टेप हमें सारी चीजें सिखाई थी, तो मैं बल्कि तमीमी से शेयर भी कर लूंगी। तो अगर उस तरीके से हम इन खवातीन को लेके चलें कि 1 बाय 1 चीजें इनको बताएं, तो पैटर्न मेकिंग इज बेसिक। जब हमें अगर पैटर्न मेकिंग आ जाएगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम अपने ड्रेसेस में इनको फॉलो करके और अपनी चीजों को बनाना शुरू कर देते। तो वंस अगेन इस्लामाबाद वुमेन चेंबर की तरफ से आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, इट्स अ गुड स्टेप। और हमारी जो पूरे पाकिस्तान की तमाम खवातीन जो है वो टेक्सटाइल और ये गारमेंट से रिलेटेड हैं, तो अगर टीडीएपी वाकई, जैसा कि उन्होंने मैडम ने पहले कहा कि टीडीएपी जो है विमेन एंटरप्रेन्योर के हवाले से उस तरीके से काम नहीं हो रहा था, बस कभी एक पहले वो वैक्सनेट हो रहा था, लेकिन अब भी कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा। तो उसमें भी उस तरीके से कोई उनके अच्छे प्रोडक्ट खवातीन के जो है क्वालिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, या अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो उस हवाले से वहाँ चीजें नहीं मिल पाती। तो एक मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा हमारा एक ये इनकम जनरेशन है कि हमारा जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट के हवाले से हम काम कर सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लें, हमारे ट्रेडिशनल वर्क्स को अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरह डिजाइनिंग में ले आए, तो नो डाउट पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अजमल साहब, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। हम अपने तौर पर एफर्ट करते रहते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्रेसिडेंट। हम इस वक्त एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर एक एनजीओ है RLCC, उसमें अंडर प्रिविलेज वुमेन को हम एक ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं 2 महीने का, एंड दैट्स ऑल अबाउट गेटिंग द थिंग्स एंड द क्वालिटी राइट। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और वो फिटिंग नहीं ठीक हो रही, तो यू रियली डोंट लाइक दैट गारमेंट, यू वांट टू फील कंफर्टेबल, और वो वेरिएबिलिटी इशू बड़ा जरूरी है। और उसके ऊपर हमने कभी कोई खास तवज्जो दी नहीं, बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल थिंग, वी डोंट लाइक वेरी फिगर हगिंग क्लोथ्स। तो उस जिम्रे में बहुत ज्यादा ईज डल जाती है, वो गारमेंट अपनी शेप लूज कर जाता है। तो अगर आप गारमेंट को अपनी शेप में रखते हुए उसमें वॉल्यूम ऐड करें, तो आई थिंक इवन देन इट विल लुक गुड, लाइक वी गेट गारमेंट फ्रॉम अब्रॉड। But we are on to this mission, and anything we can assist you as well, we are happy to do so. The software you're asking I used for pattern making. Okay, there are 2-3 separate different softwares that you use. Gerber is a very popular one which the industry is using, and it's doing very well. And then there is another Tukatech which is also very popular because it has improved version of garment technology. And the one I demonstrated with, it's Clo 3. That's very popular amongst the designers, because for designers we need to design the garment, and by the time we have finished designing the garment, if we have the pattern ready, it makes much life easier. But another thing is that
if you have a basic understanding of manual pattern making, it really helps to work on the applications and softwares. But for that, now it's much more convenient, but you can go for a designer software which is Clo 3. अच्छा, इस्लामाबाद वुमेन चेंबर का एक प्रोजेक्ट था ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हब के नाम से। तो उसमें बेसिकली हम लोग यही कर रहे थे कि जो खवातीन अपना प्रोडक्ट बना रही हैं उसके अंदर हम इनोवेशन लेकर आ रहे थे फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, क्योंकि ये ज़ाहिर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ से ही हमें एक जो है प्रोजेक्ट मिला था। अभी तो वो खैर हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैट। अपने लेवल पे हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें ये था कि वो प्रोजेक्ट तो इस्लामाबाद वुमेन चेंबर का था, बट ये कि हम और पाकिस्तान में खवातीन के साथ उसमें काम कर रहे थे। तो सर इतना अच्छा काम हमें देखने को मिलता था, लेकिन अगेन वही बात थी कि वो जैसे आपने कहा ना कि सही सिले हुए ना हो कपड़े, नेक लाइन सही ना बनी हो, स्लीव्स कहीं जा रहे हैं, शोल्डर की लेंथ कहीं जा रही है, वेस्ट कहीं जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। तो इसके सिलसिले में मैं समझती हूँ कि बड़े कोई सीरियस नोट लेने की ज़रूरत है कि हम अपना पैसा भी ज़ाया कर रही हैं खवातीन, और वो ढेर कपड़े बने पड़े हैं और वो अब नहीं टिक रहे, परेशान हाल है। तो ये इसको आप मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि चले देखने से सुनने से खवातीन को बात करने के लिए भी थोड़े से मौके आएंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता, दिस इज फर्स्ट वर्कशॉप, आई होप सो कि खवातीन ने बहुत ज़्यादा इसको लर्न किया होगा, और नेक्स्ट में फिर इनके क्वेश्चंस भी होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पैटर्न मेकिंग के ऊपर भी अगर इनकी तरफ से एक नोट आ जाए सब लोगों को, सारे चेम्बर्स में अगर ये दे दें तो चेम्बर्स फिर अपने अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर लेंगे। तो इससे भी थोड़ा सा अब ये क्योंकि जब अभी ये कराची से बात हो रही थी तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्या करने जा रहे हैं। मुझे पता है कि शायद ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन वगैरह यहाँ TTAP ने बात की थी, तो उससे मुझे पता चला। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ों की जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, अवेयरनेस होगी, और वो लोग जो अभी तक जिनको मौके नहीं मिले एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको हमें चाहिए कि आगे लेकर आए। तो ये तमाम चेम्बर्स को ऑन बोर्ड लेके और फिर उनसे आगे ये चीज़ों को करें, ताकि इसको फिर हम एक सही मानों में किसी सिमत की तरफ जाए ना। मतलब देखिए काम तो वही होता है जो किसी तरफ हमें पहुंचा देना। जी जी बिल्कुल, तो आउटकम बेस्ड अगर ऐसे बस एक एग्जीबिशन किया और हमने उसको छोड़ दिया तो दैट इज नॉट। President Mr. Humayun Zafar to give their concluding remarks of the webinar, and thank you everyone for joining. Sir, please can you conclude this webinar? Assalamu alaikum. It's heartening to note that TDAP has taken a very positive step in conducting these webinars, and we are fortunate enough to have Mr. Gauhar Ajmal, who is a person of international fame. He's been trained in the European countries, in France and Italy, and he has taken our two departments, FDM, Fashion Design Management, and Apparel Manufacturing and Merchandising to new heights. And I'm positive that under his leadership, these two departments will flourish further, and whatever was missing before, and that has been regained, and we can definitely, I am very proud to, I take pride in reporting that we have had a substantial number of students who have enrolled in these two disciplines. And these two disciplines are gaining momentum these days. And he has brought new technologies of teaching, new trainings. And as he said, and I know that due to the time constraints, his presentation was highly limited, but it is all computerized these days. And I also noticed with a lot of happiness that he mentioned the Gerber software, which basically we have installed at our campus, and with the state-of-the-art laboratories, CAD/CAM laboratories, the students are getting on-hands training on the Gerber software. It has been recently upgraded. And this webinar is just I would say this is a very small step
towards a lot of things which the fashion designers ought to know in Pakistan. And he has very rightly mentioned that we do not have standardized sizing in Pakistan, which is a dilemma. I think it is very, very unfortunate that different manufacturers are using different sizes, and there are no proper sizing charts available. These charts should have been available in the very first place. The world is moving to new heights. The fashion industry basically is moving towards uncharted territories. So I would not be taking you long, and I definitely would like to thank Mr. Gauhar Ajmal. I would like to thank TDAP and its officials. We have had a very good relationship with TDAP in the past when Javeria was the secretary, and I would like to visit TDAP in the near future, and I would also request them to visit our campus and see for themselves how we are operating, especially the apparel lab and the fashion design management and apparel management. And last but not the least, I would like to thank our program head for these two departments, Mr. Gauhar Ajmal, for his very well structured lecture on pattern making, and hope that in future he is going to benefit his knowledge will benefit the industry and TDAP in particular for further seminars. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir, for concluding this webinar. And yes, I will do my very best. I have on YouTube, I have this channel, Let's Do Pattern Making. So anybody wants to have a look at any of my videos, they just type in my name and you can see those videos. Thank you very much, everyone, for joining us, and hope to see you soon. And thank you, TDAP, for their unconditional support throughout. Thank you. Bye-bye.